Assalamu alaikum students. So this is lecture number 9 and it's about Sydney's defense of poetry against the attack of Stephen Gosson. Remember in the previous lectures we finished Aristotle's Poetics and the last topic was about catharsis. And now I have started the new critic and this is Sydney, Sir Philip Sydney. Let me tell you briefly about Sir Philip Sidney's life and which age did he belong to. He actually was an English poet, courtier, scholar, and soldier who is remembered one of the most prominent figures of Elizabethan age. Remember, he is remembered as one of the most prominent figures of the Elizabethan age. Elizabethan age is the era which we have in Renaissance. And Renaissance is the revival, rebirth of Greek art and literature. It is the reawakening of human mind after a long sleep. So, Queen Elizabeth's age starts with her reign and ends with her death. So, he is one of the most prominent figures of this particular age. His works are like Astrophil and Stella, the defense of poesy, which is also known the defense of poetry or an apology for poetry, which we are studying right now, are very famous. He was born on 30th November 1554 and died in 1586. He died at a very young age because he was um wounded in a battle of Zutphen and he could not sustain that injury. He was the eldest son of Sir Henry Sidney and Lady Mary Dudley, and his mother was the eldest daughter of John Dudley, first Duke of Northumberland, and the sister of Robert Dudley, first Earl of Leicester. His younger brother Robert Sidney was a statesman and patron of the arts, and his younger sister Mary married Henry Herbert, second Earl of Pembroke. And he was a writer, translator. That person was a writer, translator, and literary patron. So remember, Sydney had a very different background. He was by birth definitely a different, person. He had his connections with the courts. He was himself a courtier. His brothers, sisters, they all had their connections with the courts. In 1572, at the age of 18, जब वो 18 साल का था, he was elected to parliament as a member of parliament. उसे पार्लियामेंट का मेंबर चुन लिया गया and in the same year he traveled to France as part of the embassy और उसी ही साल यानी जब वो 18 साल का था तो उसे पार्लियामेंट का मेंबर चुन लिया गया और उसी ही साल उसने फ्रांस ट्रेवल किया as the embassy to negotiate a marriage between Elizabeth I and Duke Alençon. He spent the next several years in mainland Europe, moving through Germany, Italy, Poland, Kingdom of Hungary, and Austria. इन ट्रेवल्स में उसने बहुत से प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स एंड पॉलिटिशियन से उसकी मुलाकातें हुई. More seriously, quarreled with Edward de Vere, 17th Earl of Oxford, probably because of Sydney's opposition to the French marriage of Elizabeth with a much younger Alan Cohn. इसने कुछ एक मुखालफत की थी जिस मुखालफत की वजह से इसे कोर्ट से बाहर कर दिया गया था. And then when he returned to the court by the middle of 1581 and 1584 was MP for Kent. तो दोबारा उसको Kent का MP बना दिया गया. And that same year Penelope Devereux was married, apparently against her will, to Lord Rich. सिडनी को नाइट का खिताब दिया गया in 1583. An early arrangement to marry Anne Cecil, daughter of Sir William Cecil,
and eventual wife of De Vere. Remember, later that year he joined Sir John Norris in the Battle of Zutphen and fighting for the Protestant cause against the Spanish. During the battle, he was shot in the thigh. जंग हो रही थी, जंग में हिस्सा लिया, उस जंग में उसको थाई पर जो है जख्म आए एंड ही डाइड ऑफ दैट थाई इंजरी आफ्टर 26 days एंड दैट टाइम ही वाज 31. उसकी उम्र सिर्फ 31 बरस थी. तो ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन था. इट वाज अबाउट सर फिलिप सिडनी. हु वाज ही? So he was a courtier poet, and remember he was the one who defended poetry against the attack of Stephen Gosson. उसने एक प्यूरिटन स्टीफन गोसन ने पोएट्री को अटैक किया and he defended poetry against his attack. He defended poetry against the attack of Stephen Gosson. Sydney's defense of poetry against the attack of Stephen Gosson. Now, what Stephen Gosson, who was Stephen Gosson? So he was a Puritan, and he attacked poetry on several grounds. उसने कुछ grounds for poetry को attack किया था. तो वो कौन से attack थे? Let's talk about those attacks. First, he said that poetry is only a waste of time. Poetry is only a waste of time, and there are many other fruitful branches of knowledge which a man might better spend his time in them than in poetry. तो पहला जो अटैक था वो ये था कि भाई पोइट्री जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, और बहुत से और भी इल्म की ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें इंसान अपना टाइम स्पेंड करे तो वो इससे बेहतर हो सकता है. यानी शायरी करने से बेहतर हो सकता है कि अगर इंसान उस उन ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में अपना वक्त अपना टाइम स्पेंड करे. So according to Stephen Gosson, poetry is a waste of time, and it is better to spend time in other branches of knowledge than poetry. Second, according to Stephen Gosson, poetry is the mother of lies. He says that poets tell lies. Poet जो है और कुछ नहीं करते, सिर्फ झूठ बोलते हैं. That is why he said poetry is the mother of lies. The third charge which Stephen Gosson made against poetry and poets is that all species of poetry, all kinds of poetry, poetry की जितनी भी इकसाम है उन सब की वो बात करता है कि they are infected with love themes. इनमें सिर्फ लव थीम्स ही आपको मिलेगा एंड अमोरस कंसीट्स, और जो कंसीट जो कंपैरिजन भी आपको मिलेंगे वो भी अमोरस है, इमोरल यानी कि गैर अखलाकी. एंड दिस इज समथिंग दैट हैव अ डीमोरलाइजिंग इफेक्ट्स ऑन रीडर्स, और ये रीडर्स पर डीमोरलाइजिंग इफेक्ट्स छोड़ता है, यानी कि रीडर को डीमोरलाइज करता है. इट इज इमोरल, ये इमोरल है, एंड इट इज द नर्स ऑफ अब्यूसेस. और ये नर्स ऑफ अब्यूसेस मतलब ये अब्यूसेस जो है अब्यूसेस को परवान चढ़ाता है. So it is the nurse of abuses. It corrupts men and it has an effuminizing effect on readers. ये इंसान को ना सिर्फ करप्ट करता है बल्कि उस पर effuminizing effect छोड़ता है, यानी कि उसको effuminize करता है, यानी कि उसको जनाना बना देता है, जनाना सोच का हामिल बनाता है. प्लेटो, और ये तो उसका थर्ड चार्ज था, और उसके बाद उसने फोर्थ जो चार्ज लगाया, जो इल्ज़ाम लगाया पोइट्री पर यानी शायरी पर और शायर पर, तो उसने ये कहा कि प्लेटो हैड बैनिश्ड पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक. प्लेटो ने, जो वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, ही बैनिश्ड पोइट्स, ही किक्ड आउट पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट. उसने अपनी आइडियल स्टेट से शायरों को बाहर निकाल दिया. So he did not accept poets. That's why we should not accept poets as well. So these are the four charges. ये वो charges हैं, चार इल्ज़ामात हैं जो कि स्टीफन गोसन ने रेस किए थे against poetry, and जिनके जवाबात जो है सिडनी ने दिए in this his apology for poetry. Again,
First is poetry is a waste of time. Second, it is the mother of lies. Third, they in fact they demoralize men, and it has immoral effects. And the fourth one is poetry had banished Plato had banished poets from his ideal republic. Now, Sydney's reply. Sydney ने इसको कैसे defend किया, and how did he make reply to these four objections? It's in front of you. First charge, to the first charge, what Sydney says. Sydney पहले charge के बारे में क्या कहता है? He dismisses the first charge by saying that he has already proved that poetry is never a waste of time. When you read his defense of poesy, जब आप defense of poesy को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि he has already proved that poetry is never a waste of time, nor is it is a useless branch of knowledge. He has compared poetry with other branches of knowledge. He has compared poetry with philosophy, poetry with history, poetry with other branches of knowledge, and he has tried his best to prove that poetry is not a waste of time. It is something that does not tell us the truth. It only tells us what may happen. So poets, according to him, are free to express himself. He is not bound like historian. He is not bound like others. And the message of poetry is something that can be understood by everyone. He says that poetry has its effect. Poetry has its can play its role in all the domains. यानी कि कोई ऐसा डोमेन नहीं है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें पोइट्री का अमल दखल ना हो. Poetry has many kinds, like it is in the form of songs, it is in the form of epics, it is in the form of elegy, मरसिया, शायर, नात, क्या कहते हैं, मिली नगमा, और इसके अलावा भी बहुत सारी इकसाम है पोइट्री की. तो मतलब इन रिलीजियस डोमेन, इन वर्ल्डली डोमेन, in political domain, whatever domain we have, whatever field we have, poetry has its effect. But philosophy and history do not have such wide scope. So he says that uh, he has already proved that poetry is not a waste of time, and it is not a useless branch of knowledge. Then he said that the study of poetry is the most profitable exercise. Why? Because it imparts delightful, pleasurable instruction, and it inspires men to virtuous action. क्यों? क्योंकि ये pleasurable knowledge, delightful knowledge और instructions देता है, and it is something that motivates or that inspires a man to perform virtuous action. Of course, when we read or when we listen to poetry like Nath, when we listen to poetry like elegies, when we listen to poetry, many other listen to national songs and them. So what happens? And there are many other such types of poetry or poems which we listen, and when we listen to them, so we are very much motivated. Song is also a kind of poetry. So when we listen to, so there are certain songs which motivate us, which inspire us to perform good deeds, to perform virtuous action. तो वो कहता है कि poetry is definitely a profitable exercise, and it imparts knowledge. It gave us delightful instruction and inspires or motivates us to perform good deeds and virtuous action. फिर वो कहता है कि in all nations and languages, poetry is the first light giver to ignorance. Means poetry is the first thing that give us knowledge, and that drives ignorance away. हर nation में, हर language में, poetry is the first light giver to ignorance. जहालत को दूर करने के लिए सबसे पहले poetry का सहारा लिया जाता है. तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई नेशन रह गया हो. In every nation, in every language, poetry is been the first light giver. Then he says that it has also been the first nurse to give milk to her children, to enable them to feed afterwards on tougher knowledge. So poetry is the first nurse to give milk. When we definitely, अब थोड़ा इमेजिन करें कि बच्चा सो नहीं रहा होता, तो उसे क्या माँ सुनाती है, लोरियाँ सुनाती है. वो भी शायरी की एक किस्म है. लोरियाँ सुनाती है माँ, वो भी शायरी की एक किस्म है. इस तरह से बाज़ वक़्त माएँ कोई छोटी सी नज़म सुना देती हैं. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पोइट्री.
our children start learning their language from poetry. They start studying first poetry and then they start other things. So all these poems, all these types of songs, all these types of hymns, and all these are the forms of poetry. So this is what he says, that it is the first nurse to give milk to her children, so that they can feed afterwards on tougher knowledge, ताकि वो मुश्किल से मुश्किल जो इल्म है उसको आसानी से हासिल कर सकें. फिर वो मजीद क्या कहता है, सिडनी फर्दर सेज, it has helped people to learn more difficult languages, ideas and thoughts. What has helped? Poetry has helped people through the ages to learn more difficult, so that they can learn more difficult languages, ideas and thoughts. Means थ्रू पोइट्री. अभी भी ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है और बहुत सी चीज़ें बच्चों को जहन में डाली जाती हैं थ्रू पोइट्री. It is easy to remember things in the form of poetry. Sidney names a number of ancient poets of Greece, Rome, and Italy to show that before these poets, nothing good was ever written. क्यों बता रहा है वो, कि उनके बारे में बता रहा है कि इनसे पहले कोई खास चीज नहीं लिखी गई थी. These are the poets, they brought something very special, but before them there was nothing good, nothing special was written. Then he further says that in English, also Gower and Chaucer, they were the first poets whom everybody in every other kind of learning has followed. Gower और Chaucer को सबने follow किया. अब Chaucer ने जो poetry लिखी है वो कौन सी poetry है? That is also a kind of poetry and that is called narrative poetry. मिल्टन ने जो पोइट्री लिखी है उसमें आपको ज्यादा मिलेगा एपिक. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एपिक. इसी तरह से वर्ड्सवर्थ की पोइट्री आप व्हेन यू रीड वर्ड्सवर्थ पोइट्री, सो इट इज वर्ड रोमांटिक पोइट्री. ही वाज अ पोएट ऑफ नेचर. Similarly, Keats' poetry deals with beauty. When we read his poetry, so we are very much amused. It appeals to our senses. When we read the poetry of Shelley, it is also romantic poetry. इसी तरह से अगर हम अलेक्जेंडर पॉप की पोइट्री को पढ़ते हैं, so what we get, it is satiric poetry, means we find satire in the form of poetry. तो वो ये जो था, ये इसके फर्स्ट ऑब्जेक्शन का जवाब था. सेकंड ऑब्जेक्शन के जवाब में सिडनी क्या कहता है? सेकंड ऑब्जेक्शन क्या था उसका? इट इज अ मदर ऑफ लाइज. सो सिडनी सेज दैट ऑल ऑफ राइटर्स अंडर द सन द पोएट इज द लीस्ट लायर. क्या कहता है? सभी राइटर गलत बयानी करते हैं. उन सब राइटर्स में जो है शायर जो है वो इन सब में कम झूठ बोलता है. यानी कि शायर भी बोलता है लेकिन वो कम बोलता है, बाकी इसके मुकाबले में ज्यादा बोलते हैं. द एस्ट्रोनॉमर, the geometrician, the historian and others, they all make false statements, but the poet nothing affirms and therefore never lies. Poet तो किसी चीज को affirm करता ही नहीं है, इसीलिए वो झूठ नहीं बोलता. What Sidney says that the astronomer जो है, geometrician जो है, historian जो है, they all make false statements, but poet nothing affirms and therefore he never lies. तो चूंकि पोइट किसी चीज को अफर्म करता नहीं है, किसी चीज को अश्योर करता नहीं है, इसीलिए क्या है, ही नेवर टेल लाइज, वो लाई झूठ नहीं बोलता. ही डज नॉट टेल अस व्हाट इज और व्हाट इज नॉट, but he tell us what should be or what should not be, and that is why he does not tell lies according to Sidney. What he present is not fact but fiction, including truth of an ideal kind. What he present is not fact. जो हमें वो present करता है वो fact नहीं होता, बल्कि क्या होता है? It is fiction that includes truth of an ideal kind, जिसमें truth include होता है ideal kind का of an ideal kind. तो ये इसका सेकंड ऑब्जेक्शन पर रिप्लाई होता है कि इट इज नॉट अ मदर ऑफ लाइज, बट इट इज नॉट अ मदर ऑफ लाइज एंड पोएट डज नॉट टेल लाइज. व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट अफर्म एनीथिंग एल्स. ही डज नॉट प्रेजेंट फैक्ट बट फिक्शन embodying truth of an ideal kind. तो जो शख्स जो है फैक्ट बयान नहीं करता और वो फिक्शन को मेंशन करता है जिसमें ट्रुथ को वो इंक्लूड करता है, सो ही कैन नॉट affirm anything else. He can only tell us what
should be or what should not be. थर्ड जो ऑब्जेक्शन था उसका रिप्लाई इसने क्या किया, जिसमें इमोरल ग्राउंड पे उसने चार्ज लगाया था. सो टू दिस चार्ज सिडनी रिप्लाइज दैट पोएट्री डज नॉट अब्यूज मेंस विट, इट इज मेंस विट दैट अब्यूजेस पोएट्री. वो कहता है पोएट्री ही इंसान के विट को अब्यूज करता, मिसयूज करता. इट इज मेंस विट दैट अब्यूजेस पोएट्री. ये इंसान का विट है जो कि पोएट्री को अब्यूज कर रहा है, जो पोएट्री को खराब कर रहा है. यानी इंसान की अपनी जो इंटेलिजेंस या शार्प माइंडेडनेस है या जो इसकी विट है, जो वो पोएट्री को गलत इस्तेमाल कर रहा है. All arts and sciences can be misused for evils, but it does not mean that they are less valuable when rightly used. फिर वो कहता है कि तमाम जो भी आर्ट्स एंड साइंसेस है दे कैन बी मिस यूज फॉर इवल्स, ये सब गलत मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है दैट दे आर लेस वैल्यूबल, दे आर लेस इंपॉर्टेंट, दे आर लेस, दे हैव लेस significance when rightly used, when they are properly used. देन ही गिव्स एग्जांपल ऑफ अ स्वॉर्ड. फिर वो एक मिसाल देता है, जनरल सी एग्जांपल देता है एक तलवार की. क्या कहता है, विद अ स्वॉर्ड वी मे किल आवर फादर एंड विद द सेम स्वॉर्ड वी मे डिफेंड आवर प्रिंस एंड कंट्री. मतलब ये कि उस तलवार से हम अपने बाप, अपने वालिद मोहतरम का भी कत्ल कर सकते हैं और उसी तलवार से हम अपने दुश्मन को कत्ल कर सकते हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए खतरा साबित हो सकता है. सो वी कैन किल आवर द एनिमी हु इज dangerous for our country, and with the same sword we can kill our father. So it doesn't mean that that sword is wrong, or it is an evil. It is we who are wrong or who are evil, not the sword. फिर चौथे ऑब्जेक्शन के रिप्लाई में क्या कहता है, व्हाट ही सेज अबाउट द फोर्थ ऑब्जेक्शन. सो सिडनी इज वेरी कंफ्यूज्ड हियर, ही इज वेरी मच कंफ्यूज्ड by the last objection that Plato had banished poetry from his ideal state. That's why, according to Stephen Gosson, we should also remove poetry from ideal state. So here is not getting why we should do this thing. Plato said this thing, a long time ago, and that time things were different. But he did not mean that poetry should be removed from his ideal state. He was actually uh, talking about, according to Sidney, the evil side of human nature, which was using poetry in a wrong way. So he said that Plato warned men not against poetry but against its abuse. Plato warned men not against poetry but its abuse by his contemporary poets, because who filled the world with wrong opinions about their gods. जो लोगों को भड़का रहे थे, वर्गला रहे थे about their gods. आज भी अगर देखा जाए, so you can see there are many different types of poets and their poems which are tempting youth, which are tempting young people to do wrong things. एक गाना लगता है और उस गाने को सुन के हम लोग किसी और दुनिया में खो जाते हैं. वो दुनिया जो होती है क्या होती है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड होती है. और बाज़ औक़ात हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं दैट फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं हम लोग. So this is the example of a wrong kind of poetry, and this kind of poetry is something that Plato wanted to remove from his ideal state, not the real poetry. Remember, Plato's objection was directed against the theological concept. Plato की जो objection थी वो theological concept के against थी, because according to him, uh, poets were not doing their job properly. They were just misguiding people, and in his age they were demotivating people, and that is why what was happening, that youth were spoiling. Sidney further said that Plato called poet a light-winged and sacred thing, which reveals his attitude to poetry. Plato called poet a light-winged and sacred thing, which reveals his attitude to poetry. So what is poetry? What is the significance of poetry, and what is the importance of poetry? It is something that we can learn from his, this phrase that poet is a light-winged and sacred thing. Poet is a light-winged and sacred thing. This is winged, not winged. तो पोइट्री पोइट क्या है, लाइट विंग है और सेक्रेट थिंग है, मुकद्दस चीज़ है.
And remember, he said that when they should come to your state, they should be given a lot of importance, they should be garlanded, but after this, they should be kicked away. They should be kicked out from the state. So इस तरह से we can say that two Sydney poets were not, according to Sydney poets, were not responsible for this sort of abuse because they simply imitate the practice or the point of view which becomes popular or fashionable. In today's world, we can see that there are many things which have become fashionable. There are many things which have become popular, and unfortunately, in many cases, you will find that poetry is not doing what the job that it should do, and that is why you will find many problems. We are facing many problems. In other words, according to Sydney, Plato had banished the abuse of poetry and not poetry itself. Plato ने जो उसकी अब्यूज था, अब्यूज से मतलब जो पोइट्री के जो इवल साइड थी, उसको अब्यूज उसको जो है बैनिश किया था फ्रॉम हिज रियल वर्ल्ड बट नॉट पोइट्री इटसेल्फ. तो ये जो चार्ज था, चार्ज नंबर 4, चौथा एग्जाम पोइट्री पर, इसको भी उसने इस तरह से रद्द किया एंड रिजेक्टेड दिस charge as well. So, in this way, Sydney refuted the charges, or he rejected the charges which was leveled by uh, Stephen Gosson against poetry, and he has also given details. He has also mentioned in detail the significance and importance of poetry, which we'll inshallah discuss in tomorrow next week's lecture. In short, we can say that according to Sydney, we can say that Sydney has greatly defended poetry against the attack of Stephen Gosson, and Sydney has tried his best to prove that it was not poetry that should be condemned. It was the misuse of poetry that should be condemned, and that was condemned by Plato. Plato banished poets from his ideal state because he felt that poetry was being that poetry was being misused by poets. So this is what we have about today's lecture regarding Sydney's defense of poetry against um, Stephen Gosson. And who was Stephen Gosson? He was a Puritan, and he was very harsh against poetry. And Sydney tried his best to defend poetry against his attacks. Now, if you have any question, you can ask me regarding this lecture. Unfortunately, very few students are attending lecture, and this is not a good sign. If you don't attend the lectures, ये तो तकरीबन सेमेस्टर ऐसे ही चलते रहेंगे, और यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह ओपन हो चुकी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि स्ट्रेंथ और स्टूडेंट्स सब उसी तादाद में आ पाएंगे. You must attend these sessions, and if you have any problem, you should ask your teacher. If you don't attend the session, how will you ask the problems? And online classes and recording, when you listen to the recordings, so it is also good, but if you attend the classes online, it will give you more benefits than listening to the recording. So this is what we have in today's class. Remember, we have started a new critic, and this is Sir Philip Sidney, and his the first lecture I have given you about Sydney's replies to the charges which were leveled against poetry by Stephen Gosson. ये सामने जो स्लाइड है ये उसी के हवाले से है कि स्टीफन गोसन ने चार चार्जेस लगाए थे पोएट्री पर. हुआ स्टीफन गोसन, वो था कौन स्टीफन गोसन, वो भी मैंने आपको बताया कि ही वाज अ स्टॉन्च प्यूरिटन. ये एक स्टॉन्च प्यूरिटन था जिसने पोइट्री पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए. जिस तरह आज की इस दुनिया में आप देखिएगा कि बहुत से जो रिलीजियस पीपल बेंट ऑफ माइंड होते हैं, वो मोबाइल और टेलीविज़न पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि टेलीविज़न इज़ अ सोर्स ऑफ सिन, it is a source of vulgarity, it is a source of this and that thing. They also say that mobile phone is a source of all such things, internet is a source of all such things. But in reality, these are only devices. Yes, it devices say the use of all these devices are upon human beings. If we use them properly, so they are the source of uh, propagating good things. And if we use them wrongly, और अगर हम इनका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो they can become the source of spreading sin or sinful activities. So
इसी तरह से सिडनी ने भी डिफेंड किया कि पोइट्री जो है वो बुराई की जड़ नहीं है, ना ही मदर ऑफ लाइज है। जैसे कि स्टीफन गोसन ने कहा कि पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइज, सेकंड चार्ज लगाया। फिर उसने कहा कि ऑल काइंड्स ऑफ पोइट्री आर इन्फेक्टेड विद लव। उसने कहा कि तमाम किस्म की जो पोइट्री है वो इन्फेक्टेड है, किससे? लव से। लव थीम, यानी कि सब अपने आपको लव थीम मिलेगा। और अमोरस कंसीड, यानी कि इमोरल काइंड ऑफ कंपैरिजन आपको मिलेगा। जो कंपैरिजन जो शो करते हैं वो भी इमोरल टाइप के होते हैं, गैर अखलाकी होते हैं। और उससे होता है क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन गोसन, इट हैज़ अ डीमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन रीडर, जो रीडर को डीमोरलाइज करता है, और इट इज़ इमोरल। तो इसको भी इसने बहुत सक्सेसफुली सिडनी ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये इंसान के जहन पर है। इफ़ यू थिंक पॉजिटिवली यू कैन ब्रिंग पॉजिटिव इफेक्ट, एंड इफ यू थिंक नेगेटिवली सो यू विल ब्रिंग नेगेटिव इफेक्ट। रिमेंबर इट्स लाइक अ स्वॉर्ड। फिर उसने एग्जाम्पल दी कि स्वॉर्ड है, अगर आपके पास एक तलवार है तो उस तलवार से आप अपने वालिद साहब का भी कत्ल कर सकते हैं, और उस तलवार से आप अपने दुश्मन को भी मार सकते हैं। दुश्मन को मारेंगे तो वो इसका पॉजिटिव यूज़ होगा, और अगर आप अपने वालिद साहब को कत्ल करेंगे तो इसका नेगेटिव यूज़ होगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तलवार गलत है, ये हमारी हम हैं जो गलती करते हैं। सो वी शुड अवॉइड सर्चिंग आरसेल्फ। और इस तरह से उसने जो प्लेटो के की मिसाल दी कि प्लेटो वाज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड ही बेनिश points from his ideal state. So what is this? So उसके बारे में भी इसने कहा कि if Plato had banished poets from his ideal republic, so it doesn't mean that we should do. Plato banished not poets, but he banished that evil kind of poetry, that wrong or effect of poetry he banished from his ideal state, अगर आप इसको properly पढ़ें. So this is how he defended all these, he defended poetry against the charges of all these four charges. That's all. If you have any problem, you can ask me. We have only 4 minutes. हमारे पास सिर्फ 4 मिनट। इन 4 मिनट में अगर आपको कुछ पूछना तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिए। हो सकता है कि एक लेक्चर और है हमारे पास, मेरे पास रिकॉर्डेड, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। दैट इज अबाउट लैंग्वेज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और इसके बाद आई डोंट नो वेदर आई हैव टू टेक योर क्लास इनसाइड इन द क्लास, और आई हैव टू डू द सेम ऑनलाइन क्लास। ये अब इंशाल्लाह कंफर्म होगा आने वाले दिनों में। सो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी प्लीज। सर एक्सक्यूज मी, यस। सर स्टीफन गॉसन ही सिर्फ हिस्ट्री में उसके अगेंस्ट पोइट्री के, या और भी राइटर्स थे जो पोइट्री के अगेंस्ट? Actually, Stephen Gosson was a big name. He was a staunch Puritan, and he had his reputation over there in Protestant. Though Sidney himself was he was defending Protestant, वो खुद Protestant को defend कर रहा था, लेकिन he was not against poetry. तो Stephen Gosson जो था, एक नाम था उस वक्त, उसने poetry को अटैक किया, और इन 4 ग्राउंड्स पर पोइट्री को अटैक किया। और भी क्रिटिक्स होंगे, लेकिन ज़ाहिर है जो बड़ा क्रिटिक होता है उसका सामने नाम आ जाता है जल्दी। तो जब इसने अटैक किया तो सिडनी ने उसका फिर जवाब दिया। सिडनी रिमेंबर कोई क्रिटिक नहीं था, वो पोइट्री शायरी करता था, और ही वाज बेसिकली अ कोर्टियर एंड ही वाज आल्सो अ सोल्जर। नाइट था, नाइट कहते हैं जैसे हमारे यहाँ कमांडो जनरल वगैरह होते हैं, तो इसकी कोर्ट में इस तरह की एक पोजीशन थी। तो वो कुछ अरसे के लिए किसी वजह से उसको जेल भी जाना पड़ा, तो वहाँ पे फिर इसने जो है तसल्ली से बैठ कर इन चारों के जवाबात, जो इल्ज़ामात उनके जवाबात दिए, एंड दैट वी हैव इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस ऑफ पोइजी। यस, एनी अदर क्वेश्चन? इसके मैं हैंडआउट्स भी आप लोगों को भेजूंगा, काइंडली इसको भी देख लीजिएगा। और मार्केट में इसकी बुक भी अवेलेबल है जो आप खरीद सकती हैं। ओके, so there are 4 to 5 critics minimum that we have to study. One we have studied, the most important one we have studied, and now the second one is this.